Amazing. What is your number? People follow him on the news channels. Yeah, yeah. Let her announce. After announcing, you want her them. Let her. Go. You give her. ये करा था तुमको बड़े इवेंट में। अरे सेंटर में गया मैं से एक सेंटर ओके ओके इसीलिए इसको नहीं सामने सामने सर सामने सामने होल्ड 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 थैंक यू And everyone, without much further ado, time to launch the book. आप लोगों को हम हमारी जो book launch है, The Power of Phone Numbers, उसकी पहली झलक दिखाने जा रहे हैं. अरे पहली झलक देखने में ना तो बाहर So अब बारी है to launch. में book है, sir, मैम, मैं गुजारिश करूँगी कि आप ये sheet हटाएं and unveil the book. वन सेकंड सर हाँ चलो ना ठीक है ना हाथ में ले लीजिए सर वो बुके हाथ में ले बुक हाथ में ले लीजिए बुके नहीं चुप मारते श्रिंग गए थे कह ये हिला मत वन सेकंड होल्ड सर, होल्ड 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 ओके ओके बाइट कर लेते हैं चुप रहे So we would request you both to be seated. But she did, and she was wearing something that I gave her, and I directly feel that energy saved that gal's life. So that's something that I remember over there, much more than what I can tell you now, because I've been practicing this for more than 20 years. तो अगर हमारे घर का नंबर करेक्ट नहीं है तो हम किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं? Important numbers are, Anupama. वाओ, दैट इज लाइक अमेजिंग. अभी जब मैं अपना घर अफोर्ड कर पाऊंगी तो मैं सबसे पहले अपने घर का नंबर देखूंगी. सो ओपन टू मीडिया, आप में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज गो अहेड. He will present a book to Gracy ji. इनका जो और ये पहली कॉपी है जो आपको मिल रही है. सो या पीछे लेके कैमरा It's a specially signed book by Mr. Jesse for Gracy. या ग्लेयर आ रहा है मैम यहां पे यस सर आप वन सेकंड होल्ड ऑन ओके Normally, what happens is people forget the importance of an anchor in an event, but Mr. Jesse, he didn't. So, sir has got a special signed book for me also. So, sir. यहाँ पे लुक कैमरा यस या एवरीवन या अब यहाँ पे अब यहाँ from Ambadya Entertainment, one of our आप आ जाओ. यहाँ पे हम लुक योर लेफ्ट पंकज मिला कड़ा थैंक यू Guys, just make sure we all are looking good. ओके सबसे पहले ग्रेसी मैम और सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे मैम? सबसे पहले न्यूमरोलॉजी में कितना बिलीव करते हो और इस बुक के बारे में क्या कुछ आपको बताया गया, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए. जी हाँ, इससे हम जो सबसे ज़रूरी बात है हमारा घर, कि हमें उससे खुशियाँ मिलें, हमारे लिए अपना घर कितना
ज़रूरी है खुशहाल रहने के लिए, और उसमें ना सिर्फ एक मकान की बात लेकिन एक पारिवारिक संबंध भी हमारे अच्छे बने रहें, और लोगों के जीवन में कैसे खुशियाँ, सफलता और जो भी वो हासिल करना चाहें वो खुशी से मिले। तो उसकी जानकारी हमें जसी जी से मिलती है। इन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और इनकी ये जो नई किताब है उसके लिए बहुत सी शुभकामनाएं। Thank you. Sir, Yes, to sir. you, first of all, introduce yourself and tell us about yourself and sir, आर्मी बैकग्राउंड से फिर ठीक है जी। ऑथर थोड़ा सा बताइए जर्नी जी, के बारे में, हाँ। कैसी जर्नी रही और थोड़ा सा बुक के बारे में बताइए। जी, hi. So hello everybody, my name is Jesse Kalsi, and that's how I go by now, Jesse Kalsi, but actually my official name is Jasbir Singh Kalsi. And you know, I come from a military background. My father served the Indian Air Force, and my younger brother, he also served the Indian Army like me. So that's how I came, and then I served the Indian Army as a captain up until as a captain with the 1st Battalion, the 3rd Gurkha Rifles, is also called the Queen's Own. And my career was doing really, really well. In that 8.5 years of service, I was posted as a commando instructor here at Belgaum, which is not far from here. And I was also ADC to a general up in the desert. So, and then suddenly, you know, things just changed. You know, I guess my destiny flipped, and then I ended up in the United States of America. You know, I had big dreams of, you know, making it big, but the thing was, I was just an Army officer, right? I was not trained to make money, you see. And, but the dream was big when, just like Gracy said earlier, a positive mind, right? And you put your eyes on a goal is exactly what I did. And then when I ended up in America, right, I had this basic knowledge which was kind of tickling my back all the time, but I stuck to that, you know, I stuck to that information, and that's what I followed all the way. And then as I went along, you know, in that journey, I certainly happened to meet, you know, people, you know, and then I got hooked up with the American media, you know. I remember one time I'll give you one quickly, just a few words about this one example I'll tell you. And I was in my office one day, it was kind of raining out there, and then this one gal made an appointment with me, you know, she was from the Pacific Island, the Fiji Islander. And she said, hey, Mr. Kalsi, I want to come and see you quickly for an appointment. So I was standing outside sipping coffee, it was raining there. And so she parks her car, and then she comes straight and very, very upset and angry, you know. She sits right across the table like that and says, you know, I don't know why I came to see you. I said, what happened? He says, you know, the man I married wears a turban like you is a miserable guy. You know, he's made my life hell or whatever. So we talked, went back and forth, right? And then she paid me money, and then she gets in her car, and then she calls Bonnie Colleen. I've mentioned her name right behind the book. She runs a station called Singh Beyond in San Francisco. It comes in the morning drive or rush hour, right? So then Bonnie suddenly calls me from nowhere, a positive mind. And then she asked me a few questions. Say, hey, Mr. Kalsi, Jesse, you want to be on the radio station? And you know, I mean, I have never been on a radio station. And she said, why don't you come on the radio station morning? You know, people will listen to you, and I'll take a short interview, right? And then when I went to the station, she said, oh, you know, can people ask you questions? I got very nervous, you know. I said, my God, you know, kya question पूछेंगे सुबह इतने दुनिया गाड़ी में घूम रही है, you know, and like. But anyway, so I remember the first caller was this one lady, right? So she calls me and she says, hey, Mr. Kalsi, she had a British accent, right? So she said, oh, I remember her date was some 16th or something. So what do you think? Give me something about my numbers, right? I told her, hey, listen, number 16, I said, your date of birth? There's some health issue with you, and it's kind of going waist and downwards, right? And she said, oh my God. She says, you know, I have to leave for London tomorrow for some kind of, you know, female-related surgery or something. So that's how it started. I mean, it was like a sign from God saying, hey, listen, the first caller has agreed with you, now the gates are open. And that's exactly what happened, right? Abhi, you know, I sit on all radio stations there, the phones don't stop to ring. You know, I did a Persian television one time, it's called Apatana Television. The producer there, he told me, he says, Mr. Kalsi, I've never seen anyone, you know, who comes and talks to a Persian audience, Apatana Television, and people calling from Iran and God knows, all the world, you know. Okay. You know, so that's how the lines would ring there. And it still keeps going like that, and I'm really grateful for everything that was happening, and that's exactly how this book was born. ग्रेसी मैम, आप कितना बिलीव करती हैं न्यूमरोलॉजी में, थोड़ा सा बताइए, और कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? जैसे इतना मैंने एस्ट्रोलॉजी में स्टडी नहीं किया, लेकिन मैं ये ज़रूर बिलीव करती हूँ कि इसमें बहुत पावर है। मैं यही बात एक बिलीव करती हूँ कि जैसे हमने इतने सारे कानून बनाए हैं, तो यूनिवर्स का भी एक कानून है, तो जो भी हम करेंगे अपने कर्म के हिसाब से हमारे पास वही आएगा। तो सफलता हासिल करने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि
हम जो भी करना चाहें, काम करें, उसमें एक बात का ध्यान रखें कि किसी का भी कोई नुकसान नहीं हो। तो अगर किसी एक का भी नुकसान होता है तो ऑब्वियसली फिर हमें वो मुश्किलें आती हैं। लेकिन अगर हम ये भावना के साथ काम करते हैं कि सबको फ़ायदा हो, औरों को भी खुशी हो, सफलता मिले, तो पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करता है आपको वो सब दिलवाने में जो आप चाहते हैं। तो आई डू बिलीव दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, एंड येस वी डू हैव पॉजिटिव नंबर्स विच आर कॉम्प्लीमेंटिंग आर डेस्टिनी। तो जी मैम, बीइंग एन आउटसाइडर, थोड़ा सा अगर जर्नी के बारे में आप हमारी ऑडियंस को बताएं। अप्स एंड डाउन सबकी जी हाँ। लाइफ में आते हैं, लेकिन आप कैसे खुद को मोटिवेट करती है, कैसे इंस्पायर होती है, अगर थोड़ा सा हमारी कि ऑडियंस कभी भी हमें हारना नहीं चाहिए। जब मैं अपनी पहली पिक्चर कर रही थी तो वो गाना बार बार मेरे मन में था कि सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहेगी। तो आपके मन में सच और साहस रहेगा, सच्चाई से ही चलना है, तो जितनी भी मुश्किलें आएंगी लेकिन वो आपको हरा नहीं सकती। वो एक आपका टेस्ट होता है, आपको और मजबूत बनाने के लिए सारी मुश्किलें आपके जीवन में आती हैं। लेकिन आपको कभी भी उससे निराश नहीं होना, मायूस नहीं होना, और किसी को कोई दुख नहीं देना। बस इसी बात का ध्यान रखना है। और हमें ऑब्वियसली ऐसे सब इंस्पायर करने वाले, जो हमारी मदद करने वाले हैं, तो वो हमारे से ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करते रहेंगे आपके जीवन में। जब भी कोई कठिनाई आएगी आप इन्हीं चीज़ों से मदद ले सकते हैं। तो always God and universe is there to help every human being. So life is very precious and you have to enjoy and be happy in life. That's what I believe. Yes, in. beautiful. That's beautiful. सर के साथ किस तरह का कोलैबोरेशन है? सर के साथ कुछ जी। बातचीत हुई उस चीज़ पे? सर जी, ने मुझे ये क्या आज कुछ- पहली बार ये किताब मिली है। मैं ज़रूर इसके बारे में जानकारी रखूँगी। और इनसे जो भी, क्योंकि हमारे भी परिवार में मेरे जो संबंधी, मेरी बुआ है जिन्होंने मेरा नाम रखा था ग्रेसी, वो भी कलसी फैमिली है। Oh my तो God. ये एक रिलेशन है, Oh my God. This guy, कनेक्शन। yeah. सब मेरी भाभी भी अभी हैं, परमजीत कौर कलसी, Whoa. बलविंदर कलसी। सो देयर इज़ अ फैमिली So there's a divine tradition. plan, Gracie. You know, like so I was talking to somebody recently. He says, Mr. Kalsi, अपना कोई plan नहीं होता. हाँ, Divine plan ही होता डिवाइन है. प्लान होता हाँ. है, डिवाइन। वही चलता है. And this is all a part of the divine plan, right? All this is a Absolutely. divine plan. Yes, Wonderful. yes. मैम, दोनों मीडियम में काम किया आपने, अभी छोटे पर्दे पर भी हमने आपको देखा। जी। तो क्या क्या क्राइटेरिया है, मतलब ऐसा हाँ, कोई हाँ। खास चीज़ें जो देखती है आप प्रोजेक्ट में, और कोई अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें आप? टेलीविज़न के ही है ये प्रोजेक्ट। मेरा सपना था कि मैं कुछ ऐसा रोल करूं जिससे लोगों के जीवन में और भी प्रेरणा मिले। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू प्ले द गॉडेस संतोषी माँ अगेन। तो सेकंड सीजन इज कमिंग। जी, सेकंड, यस यस। ओके मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। जी। बुक के साथ चाहिए ऐसे ही चलेगा? ये ऐसी बुक के साथ ही मिल गया है, ऐसी विजुअल्स। सब लोग स्माइल स्माइल एवरीवन। ये तो भाई आपका चलो सुनो मैंगो। थैंक यू। अंबर ने लुक कैमरा। यस, अंबर ने भी दिखे। हाँ हाँ नीचे कर, मैं नीचे 1 सेकंड। हाँ, यस। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। अरे पूरा दिख रहा है आपको। इधर देखिए। पीछे भी जितू यार कैमरा, वेट स्माइल। बच्चों चप्पू इधर इधर पकड़ा बजण्यासाठी। वी बोथ विथ ग्रेस। हेलो मैडम। सर इथे बघा, थैंक यू। इथे बघा। मैम यहाँ पे एक
सेल्फी शुभम काय बोलतो? मुझे भी सेल्फी लेना है। जी है आप ले लीजिए। मैंने मैंने ना छोटे बच्चों से सीखा है सेल्फी लेना है। Yes. तो इवन आई वही वन लास्ट सॉरी यहाँ पे